Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here, I'll tell you about the reasons. There are some facts in agriculture with respect to nutrients availability and their utilization, use efficiency, and their requirement. So, I'll tell you about the fact and what is the reason behind this fact. So, we should know about this reason because in examination assertion and reason type questions are asked. So, this reason and assertion, the idea may be clear if we know that what is the exact fact. If we know the exact fact, then we can say this assertion is true or false, and what is the exact reason, then we can say what is the actual idea or actual theory or actual concept behind it. So, there are 5 statements here, or we can say 5 facts, and I will tell you about these facts and the reasons. And in the playlist there is soil fertility lecture, and you may watch this lecture, already have been explained. Now further I am explaining here for your clear cut idea. तो आप प्ले लिस्ट में जाके सॉइल फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लेक्चर्स देखिए, आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया होगा सॉइल फर्टिलिटी का. फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको वो मेमोरी में रहें और आप क्वेश्चंस को सही कर सकें. देयर इज फर्स्ट वन इज लो नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम यूज एफिशिएंसी. दिस इज ट्रू दैट व्हेन वी अप्लाई नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम then plant uptake and their utilization is very low. So what is the reason that there is low nitrogen use efficiency, phosphorus use efficiency and potassium use efficiency? Actually, when we apply the fertilizer or nutrients, the total amount is not utilized by the crop. Some amount is lost into the groundwater, for example nitrate leaching. Some may be lost into the atmosphere as a gaseous loss. Some amount is converted into insoluble form and not available to plant. So these are the reasons that the total amount is not available to plant. Since a small part of applied nutrient is available, that's why nutrient use efficiency is poor. So in case of nitrogen, phosphorus and potassium, the reasons are different. The reason is not same. In case of nitrogen, poor use efficiency is due to its different form of loss. There are different form of loss for nitrogen. First one is that it is converted into nitrate, and nitrate is highly soluble and it is leached down into the soil and reach at the groundwater table and cause the pollution. So in this form nitrate is lost. If ammonium is there, ammonium is interclay layer fixation, and during the crop growth period it is not available to plant. So ammonium availability is reduced because of its fixation. Nitrate availability is reduced due to its leaching. So these are the reason. Other reason is that if there are anaerobic condition, means waterlogging is there or oxygen availability is poor and nitrate ions are there, then microbes use this oxygen for their respiration, and this is now converted into N2O form and it is lost into the atmosphere. So it is the denitrification. So denitrification is due to utilization of oxygen which is present in nitrate. So this is the another reason. Another may be that ammonium ions are there and high pH and high moisture is there, then it is converted into ammonia gas. So volatilization is there. Volatilization loss is there. So in case of nitrate, leaching is there. Leaching and denitrification. In case of ammonium, volatilization and interclay layer fixation. So leaching loss is there, denitrification, volatilization, fixation. Besides this, nitrogen is required by microbes and weeds. So weeds also use this nitrogen, and the total applied nitrogen is lost into different form and utilized by the weeds. So that's why nitrogen use efficiency is very poor.
But in case of this phosphorus, the reason is different. The reason is not the leaching. In case of phosphorus, there is no leaching and no denitrification, and but this phosphorus under high water condition may be lost as a phosphine, but this phosphine loss pH 3, phosphine loss is very less. But the major factor behind the low phosphorus use efficiency is that this H2PO4 phosphorus is remain either in primary orthophosphate or secondary orthophosphate, and this is the absorption form of phosphorus. Remember that phosphorus is not absorbed in this form. This is not the absorption form. Phosphorus is absorbed in primary orthophosphate and secondary orthophosphates, and these orthophosphates are highly reactive. Phosphorus is highly reactive and it cannot remain as such. For example, ammonium and nitrate remain in soil as such in this form, but phosphorus doesn't exist in this form because it is highly reactive and makes some chemical reactions. So it react with the ammonium, it react with the phosphorus, it react with the calcium, magnesium, even with the organic matter and with the clay fraction also. So at low pH, when there is acidic condition, then there is a dominance of aluminum and iron, then phosphate ions react with the aluminum and iron and make aluminum phosphate and iron phosphate. And at high pH, when there is a dominance of calcium and magnesium, then this phosphate ion react with this calcium and magnesium, make calcium phosphate and magnesium phosphate, and these are the insoluble form. So insoluble forms are formed, and if soil pH is neutral, then it make a reaction or it get fixed with the clay fraction. So this is the reason that the whatever amount present in soil of phosphorus, that is not available. So there are two forms, total phosphorus and available phosphorus. So whenever we determine the phosphorus, that's why our interest is in what is the available phosphorus, not total phosphorus, because total phosphorus may be high, but available phosphorus means H2O4 and H2O4 may be less. So this is the reason that why phosphorus use efficiency is low, because it is highly reactive and get converted into insoluble form under acidic condition, aluminum and iron phosphate, and at high pH calcium and magnesium phosphate, and particularly calcium, and at neutral pH clay fraction and organic matter. So the reason for nitrogen and phosphorus are entirely different, and under high moisture condition this phosphorus may be converted into phosphine gas, but chances are very less. So there is no leaching loss of phosphorus, there is no gaseous loss of phosphorus. Phosphorus remain into the soil, remain into the soil root zone, but in insoluble form. But in case of nitrogen, it is removed from root zone, either below as in groundwater or into the atmosphere. Now the case with the potassium is different from that of nitrogen phosphorus. तो पोटेशियम की जो यूज एफिशिएंसी है वो इस कारण से कम हो रही है, पोटेशियम कन्वर्टेड इनटू नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म. This is the problem with the potassium, that potassium is also reactive. It is reactive element, and in soil it is converted into non-exchangeable form, and in soil solution potassium amount is very less. So this is the problem, that this soil solution potassium which is present in soil solution is converted into non-exchangeable form. So this is the problem with the potassium. So when we apply potassium like muriate of potash, K plus is there, muriate of potash is KCl, potassium chloride. So this is the common phosphatic fertilizer we use in agriculture. This MOP, muriate of potash. Actually muriate of potash is KCl. When we apply into the soil, it get converted into K plus or chloride. Another fertilizer is potassium sulfate. It is converted into potassium ion and sulfate ion. When this potassium is there, so for root absorption it should be in soil solution.
It is in soil solution but converted into non-exchangeable form. So this is the problem, that it is converted into non-exchangeable form and plant availability is reduced, and over the time period it is converted into exchangeable form and availability is increased. It is not like that once it is converted into non-exchangeable form then not available to plant. ऐसा नहीं है कि एक बार ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो एक्सचेंजेबल फॉर्म में नहीं आएगा. ये रिवर्सिबल फॉर्म रहती हैं कि एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल एंड एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल, फिर नॉन एक्सचेंजेबल से एक्सचेंजेबल. तो ये एक डायनेमिक बनी रहती है सॉइल सॉल्यूशन में. इसके थ्रू ही पोटेशियम अवेलेबल होता है. लेकिन जब हमने अप्लाई किया फिर ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो समय प्लांट्स को नहीं मिला. दैट्स वाई इट्स न्यूट्रिएंट, इट्स यूज इफिशिएंसी बिकम पुअर. सो ये रीजन होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम लो use efficiency. Now in case of micronutrients, particularly metallic cations, copper, zinc, copper, manganese and iron. So these micronutrients are applied through fertilizer, and these are metallic cations are also reactive. These are highly reactive and converted into other compounds which are insoluble. So that's why their ability to plant is poor, and they are converted to hydroxide form, carbonate form, oxide form if pH is high. So their use efficiency is already low, and if pH is high then further their ability becomes poor, and high pH ability become very less. So in general, when we apply into the soil, their availability becomes poor because they are highly reactive and converted into insoluble compounds, because a number of compounds are present in soil and they react with this compound and the new formed compounds are insoluble. और किसी भी न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी के लिए उस कंपाउंड का सॉल्युबल होना जरूरी है. अब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एट नॉर्मल पीएच, insoluble compound. Okay, and at high pH, oxides and hydroxide. So that's why we go for foliar application of micronutrients. तो अगर हमको सॉइल एप्लीकेशन करना है, फोलियर एप्लीकेशन करना है, तो सॉइल एप्लीकेशन में हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी क्योंकि ये सॉइल में जाते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसी रीजन से हम क्या करते हैं, इनका फोलियर एप्लीकेशन करते हैं. सो इट इज सजेस्टेड दैट अप्लाई माइक्रोन्यूट्रिएंट थ्रू फोलियर application. Then another is high organic matter causes low availability of zinc and copper. Organic matter is good source of nutrient and it positively influence soil physical properties, biological properties and chemical properties. And organic matter content in soil should be good, but very high content of organic matter reduces zinc and copper. अगर soil में बहुत ज़्यादा organic matter है तो जिंक और कॉपर की अवेलेबिलिटी पुअर हो जाती है. तो एक तरह से ये नेगेटिव रोल हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर का अगर हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालें. ये जो मेटालिक कैटायंस हैं, मे बी मैग्नीज, ओके, बिकॉज दिस ऑर्गेनिक मैटर हैज मेक कॉम्प्लेक्स विद द मेटालिक कैटायंस. एक्चुअली दीज आर Zn++, Cu++, देन मैग्नीज 4+ to 2+, देन आयरन, फेरिक एंड फेरस, एंड दिस पॉजिटिव आयन make complex with the organic matter. So there is a organic matter chelation. We can say it is chelation. Metallic cation chelation is there with the organic matter. अब चिलेट्स क्या होते हैं, उसके साथ फिक्स हो जाते हैं और उस समय उनकी अवेलेबिलिटी प्लांट्स को नहीं हो पाती. हालांकि बाद में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड व्हेन देयर इज अ डिमांड ऑफ द क्रॉप देन नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. सो दैट्स व्हाई हाई और ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर reduces the availability of zinc and copper. तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट हो सकता है हाई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालने से. तो ये एक रीज़न है कि वाई जिंक एंड कॉपर अवेलेबिलिटी रिड्यूसेस ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ देयर चिलेशन. दे मेक द कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो रिलीज नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके रिलीज होते हैं. देन मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एट न्यूट्रल पीएच. We all know that neutral pH 6.5 to 7.5 is the best pH, optimum pH
फॉर न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एट दिस पीएच। इसको सॉइल फर्टिलिटी के लेक्चर में मैं कई बार बता भी चुका हूं और आप जानते भी होंगे ऐसा क्यों होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द रीजन दैट maximum nutrient. There are 17 essential nutrients and maximum nutrient availability is at pH 6.5 to 7.5. Some nutrients are available at acidic pH and some are available at high pH. If we talk about under acidic condition, metallic cations, zinc, copper, manganese, iron, and at high pH, calcium, magnesium, potassium, basic cations. Okay, so at this pH level, actually nutrient availability is decided by two factors. Number one, what is its solubility, कि न्यूट्रेंट की solubility किस pH पे ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रेंट कुछ कंपाउंड्स बना लेता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेता है, जैसे एल्युमिनियम फास्फेट है या आयरन फास्फेट है, इनसॉल्युबल कंपाउंड है, तो न्यूट्रेंट का एक सॉल्युबल फॉर्म में होना जरूरी है। एंड एट दिस pH मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर इन सॉल्युबल फॉर्म। तो इस पीएच पे जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि लो पीएच पे कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्युबल नहीं होंगे, हाई पीएच पे जिंक मैग्नीज आयरन ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो एट दिस पीएच मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर इन देयर सॉल्युबल फॉर्म, सो दैट्स व्हाई दे आर इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। दिस इज द फर्स्ट रीजन। अनदर इज दैट the nutrients are released by mineralization process and this mineralization process is carried by microbes, particularly bacteria, and bacterial population, microbial population is maximum at this range. So this is the reason that at neutral pH there is maximum availability of nutrient. तो biological activity जो हो रही है या microbial decomposition जो हो रहा है या mineralization से जो nutrient release हो रहे हैं वो किस pH पे होते हैं? neutral pH पे. So this is the another reason. So there are two major reasons. Number one, maximum nutrient solubility at this pH range. Number two, maximum microbial activity which is involved in nutrient transformation, mineralization and nutrient release by organic matter. So this is the reason. Then another is why there is a low requirement of micronutrients. And we know that the essential nutrients are categorized in two parts, macronutrient and micronutrient. Macronutrient NPK, calcium, magnesium, sulfur, and micronutrient FeCu, MnZn, boron, chlorine, molybdenum, and nickel. And this categorization is based on plant requirement. So those nutrients which are required by the plant in large quantity are termed as macronutrient, and some are required in low quantity are termed as micronutrient. ये बात हम सभी जानते हैं कि macronutrients किसको कहते हैं और micronutrients किसको कहते हैं। लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत कम क्यों है प्लांट को? FeCu, MnZn, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकिल, इनकी जो जरूरत है वो कम क्यों है? देखिए जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड, एंड इन दिस स्ट्रक्चर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। इन दिस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नॉट पोटेशियम, पोटेशियम किसी भी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, पोटेशियम किसी का भी पार्ट नहीं है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दिस आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एंड प्लांट स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, protein, carbohydrate, fat. So that's why their requirement is more. But these micronutrients are not the part of any organic structure. किसी का भी पार्ट नहीं है, ना प्रोटीन का है, ना फैट का है, ना कार्बोहाइड्रेट का है. They act as a charge balance or act as a electron transfer, electron carrier and enzyme activation. That's why their requirement is low. अब प्लांट है, प्लांट के अंदर कितना सारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. प्रोटीन है तो नाइट्रोजन, सल्फर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेल वाल बनी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम की जरूरत ज़्यादा होगी, उसमें बोरोन की होगा लेकिन कम होगा उसमें. सल्फर है, ऑयल सिंथेसिस के लिए चाहिए. तो इन स्ट्रक्चर्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और इन स्ट्रक्चर में कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते हैं, उनको हम दूसरे पर्पस के लिए चाहिए, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नाउ इट वुड बी क्लियर दैट व्हाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इज लो, बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. अब क्वेश्चन है कि पोटेशियम तो किसी का भी पार्ट नहीं है, वो फ्री रहता है. पोटेशियम रिमेन फ्री इन द सेल सैप एज अ K+, वो किसी का पार्ट नहीं है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी का भी पार्ट नहीं है. फिर पोटेशियम की जरूरत क्यों है? पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ many enzymes, many enzymes. It is required for turgor pressure. It is required for closing
क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जितने भी टर्गर रिलेटेड प्रेशर्स हैं, दे रिक्वायर पोटेशियम. दैट्स व्हाई पोटेशियम रिक्वायरमेंट इज मोर, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ मैनी एंजाइम्स. जितने भी एंजाइम्स हैं, चाहे इसके रेस्पिरेशन के हैं, फोटोसिंथेसिस के हैं, कोई भी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रहा है, जितने भी एंजाइम्स हैं, दे आर एक्टिवेटेड बाय पोटेशियम. तो पोटेशियम में किसी में कोफैक्टर की तरह यूज कर रहा है, तो किसी को एक्टिवेट कर रहा है, कैटलिस्ट चाहिए. तो दैट्स वाई पोटेशियम रिक्वायरमेंट इज हाई. ये किसका पार्ट नहीं है, फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट हाई है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड रिक्वायर्ड फॉर टर्गर रिलेटेड प्रेशर प्रोसेस. सो दीज आर सम रीजन्स कि ऐसा क्यों होता है, ये इसको हमने डिस्कस किया. एंड मैनी असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में बी formed on this basis. So actually these are the facts. We should know the facts, and these facts are asked in the form of assertion. And what is the exact theory or concept behind it is known as a reason. So these questions may be asked in form of assertion and reason. तो ये आपको clear होगा why there is so. So you may watch the lecture in the playlist in soil fertility and nutrient management for your further clarity of the content. Thank you very much.